Hey guys, good morning. This is Dol here, and you are watching KD Architect. So, welcome to KD Architect. So, today in this video, we'll see something new regarding phasing in the Revit. So, what are the phases and what are the combination of phase in the Revit and existing phase and new construction phase, and what is the meaning of that phase, and how can we understand and how can we use those phase in the Revit while we work on the project and what is the meaning, and we'll see step by step tutorial to use the phasing and phase filters in this video. So instead of wasting time, let's get started. So as you can see on the screen, we have over here level 1 and level 2, and over here just I have keep open the view 3D view so I can show you the phasing better. So first of all, as you can see, I have just model basic walls and doors, and I have added some families of furnitures and plumbing. So, first of all, if you see over here in the properties, over here in the phasing, if you see, we have over here, if we select any element, then if you find over here phase created new construction, that means जो भी यहाँ पे element है वो new construction में है. And suppose if I want to add this element into existing, then just I want to drop down over here and just select the existing. So now if you see over here, the phase created is changed to existing. So like this way, you can change the phase of the element later. So if you model the element into new construction, and if you want to change the element into the existing construction, then like this way you can switch the phase of the element. Okay, so I hope you understood how to change the phase of element. Now let's understand what is the existing phase and what is the new construction phase. So suppose if you are working on the any project, एंड इन दैट प्रोजेक्ट आपको कोई एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर है, एंड वो स्ट्रक्चर या बिल्डिंग में आपको कुछ पार्ट डेमोलिश करके वही एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर उसके ऊपर सिंगल स्टोरी या टू स्टोरी एड ऑन करना है, और या तो फिर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है जो भी एग्जिस्टिंग प्लान है उसके अंदर डेमोलिशन करके. सो in this situation, you can use the phasing of existing and new construction in the Revit. So let's understand. So first of all, I have created elements randomly. So just first of all, we'll uh, set this element to existing so I can explain better. So first of all, let's suppose if we have condition like this, this is our existing structure. So first of all, let me change the phase of this all element to existing. So for that, select all, we'll go to filter over here, and we'll uncheck this option curtain wall grids and click on the OK. So we are able to now change the OK. Still we haven't changed the phase of element. Again, let me go to filters, and again let's do uncheck these curtain panels and click on the OK. Okay, now we are able to change the phase of the element of selected elements. Now we'll change to existing, and now select the curtain wall, and now over here already in existing phase. Okay, so if you see, let me change to consistent color over here. Okay, now I guess we have added all elements to existing phase. So let's suppose if we have condition that this is our existing structure and that we have model in existing phase. Okay, now just we want to demolish some part and just want to add another one story above this existing structure, and the story which we will be adding, that is our new construction. So how can we add and how can we work with phasing, we'll understand. Okay, so first of all, if we go in a floor plan, and let's suppose uh, let's demolish some part over here. So okay, so if we have, this is our existing walls, and we'll demolish all interior walls and furniture. We'll keep
these existing exterior walls. Okay, so to demolish, we'll go in modify tab, and over here you can demolish by this tool, demolish tool. So you just need to select the element, and element will go on in the demolition phase. So if you see, आप जब भी उसको डेमोलिश करोगे तो यहाँ से वो डैश लाइन में आ जाएगा, दैट मीन्स वो पार्ट है वो डेमोलिश में चला गया है। सो यहाँ से हम रैंडमली और इंटीरियर जो भी हमारा लेआउट्स है उसको हम डेमोलिशन में यहाँ पे डेमोलिशन फेज में उसको स्विच करेंगे। ओके, नाउ इफ यू सी, आई गेस वी हैव एडेड ऑल इंटीरियर एलिमेंट्स टू डेमोलिशन फेज। सो जब भी आप डेमोलिशन फेज में ऐड करोगे, सो इस तरह से डैश लाइन में वो शो करेगा इन द प्लान एज वेल एज इन द 3D। So I'll show you in 3D. Let me hide this view, and if you see, let me change to again hidden line. Okay. So as I said, वो 3D में भी यहाँ पे इस तरह से demolition में वो show करेगा। So like this way, you can add the elements to the demolition, and like this way, you can demolish any part of building. Okay, now let's understand. First of all, we'll model some elements into new construction. So let's suppose, let's go to level 2, and over here, we'll make some walls in the new construction. सो अगर आपको डायरेक्टली लेवल 2 के अंदर न्यू कंस्ट्रक्शन क्रिएट करना है, सो जस्ट यहाँ पे आपको न्यू कंस्ट्रक्शन फेज यहाँ पे रखना है। सो जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे लेवल 2 में क्रिएट करोगे वो न्यू कंस्ट्रक्शन में क्रिएट होगा। एंड नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग ओवर हियर, दैट इज इफ वी स्विच एनी व्यू, सो यहाँ पे इन द प्रॉपर्टी बार यहाँ पे जो फेज है वो पर्टिकुलर, अगर हम यहाँ पे अगर फेज जो है वो चेंज करते हैं, सपोज एग्जिस्टिंग चेंज करते हैं, तो पर्टिकुलर लेवल 1 के लिए यहाँ पे चेंज होगा। एंड इफ यू गो इनटू लेवल 2, सो इफ यू सी यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन है, बिकॉज इट्स वर्क एज अ इंस्टेंस पैरामीटर। सो जो भी व्यू में आपको वर्क करना है और जो भी फेज में वर्क करना है, वो पर्टिकुलर व्यू के लिए आपको वो फेज यहाँ पे एक्टिव रखना है। So I hope you understood the meaning of this, property of this phasing parameter over here. So over here, we are creating level 2 to level 3 wall. Okay, let's select pick line, and level 2 to level 2 से हम level 3 तक हम wall create करेंगे, and over here pick walls, pick lines. And over here we'll select location line, finish face, exterior. Okay, so let me finish these walls. Here we are using trim and extend command. So as you can see, over here we have created the second floor, and now let me create one floor. Now again we are working in a new construction phase. So जो भी एलिमेंट हम क्रिएट करेंगे वो न्यू कंस्ट्रक्शन में क्रिएट होंगे। सो यहाँ पे हम एक फ्लोर को क्रिएट कर लेंगे, एंड जस्ट वी आर यूजिंग पिक वॉल्स, एंड लेट्स फिनिश दिस। ओके, सो फ्लोर जो है वो सेम ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे। सो दैट मीन्स let me change the floor type over here to 12 inch, and we'll switch to level 3. Okay, so as you can see, this floor is in new construction and in the level 3. Okay, so let's suppose, now let me change to hidden line again, consistent color, sorry. So if as you can see over here, if you observe over here, जो भी हमारा existing part है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्रे लाइंस में शो कर रहा है, एंड जो भी न्यू कंस्ट्रक्शन हमने क्रिएट किया है above the first floor, this is our second floor, so वो as you can see यहाँ पे with the black lines and full tone में यहाँ पे शो कर रहा है, and जो भी existing है वो half tone में शो कर रहा है। So like this way you can model the element, or you can model the part of your building in existing and new construction phase. So I hope you understood how to create elements in the existing phase, in the new construction phase. Now let's understand the different filters in the phasing. So over here, let me go to 3D view, and if we go in a property of that view, then here you will find phase filter. So if you drop down over here, we have multiple options of phase filter. So we'll understand meaning of
all options one by one. Okay, so first of all, in the 3D view, over here, if you observe, we have show all option. That means यहाँ पे जो भी हमारा existing structure है, जो भी हमने demolition में एलिमेंट यहाँ पे चेंज किए हैं, एंड जो भी हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन है वो सारे यहाँ पे शो करेंगे. सो इफ यू सी, लेट मी over here select the section box, and now first of all let me set the section box to appropriate way, and I'll show you the demolished element, existing element, and new construction element. So if you see, if you select over here, show all option, that means existing, demolished, and new construction, all elements will be visible over here. So if I'll crop some element, okay, section box. So if you see, over here we have demolished part. This is in dashed, and this is our existing walls. And if we set the boundaries of section box over here, then if you see, this is our new construction. So if you select over here show all option, that means आप सारे elements यहाँ पे देख सकते हो, demolition, new construction, and existing also. So I hope you understand the meaning of show all option. Now let's understand show complete. So if you see, if you select this option show complete, that means suppose आपने कोई existing building है, उसके अंदर कुछ part demolition किया है, उसके बाद new construction किया है. So जो भी आपका एग्जिस्टिंग है प्लस जो भी आपने न्यू कंस्ट्रक्शन क्रिएट किया है वही यहाँ पे शो करेगा. जो डेमोलिशन कर दिया वो यहाँ से एलिमेंट्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे. सो लेट मी शो यू. सो इफ यू सी ओवर हियर, लेट मी change to hidden line over here. So as we understood that we have modeled this element to new construction, and below this was our existing, and जो भी हमने फर्स्ट फ्लोर में इंटीरियर एलिमेंट्स थे वो हमारे डेमोलिशन में थे. सो दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एलिमेंट शो नहीं कर रहा है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ शो कंप्लीट. So whenever you select this option, show complete option, at that time the demolished element will be disappear. So only existing plus new construction elements will be visible over here. Okay, now let's jump to another option over here, and let me again change to consistent color, and let's select third option, that is our show demolish. So that means जो भी हमारा existing structure है उसके अंदर जो part हमने demolish किया है वो यहाँ पे show करेगा. So if we set this box somewhere here, so you can see clearly. So यहाँ पे जो भी हमारा existing building and उसके अंदर जो भी existing part हमने demolish किया है वो यहाँ पे show कर रहा है. So when you select this option, show demolish only, then जो भी demolition part है existing structure में वो यहाँ पे show करेगा. Okay, so let me again uncheck this option, and let's select the element and use the px. Okay, that's fine. And let's extend the top boundary. Okay, now let's understand next phase filter, that is our show new plus existing. That means जो भी हमारा new plus existing है वही show करेगा यहाँ पे. So let me select. So if we select, so यहाँ पे हमारा existing जो भी है वो प्लस हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन जो भी हमारा सेकंड फ्लोर है वो ही यहाँ पे शो कर रहा है. जो हमने इंटीरियर पोर्शन जो हमने फर्स्ट फ्लोर के अंदर यहाँ पे जो भी डेमोलिशन में डेमोलिश किया था वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है. सो दिस फिल्टर विल वर्क एज it will show only new plus existing. So I hope you understood the meaning of filters. Now let's jump to next filter. So next one is this is our last, show only current phase. So let me explain the meaning of that, and let's select that option. Now if you select any view and here आपने जो भी यहाँ पे फेस सिलेक्ट किया है
वो ही यहाँ पे विजिबल रहेगा। सपोज आपने न्यू कंस्ट्रक्शन किया है, दैट मीन्स यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन ही शो करेगा। एंड इफ यू सिलेक्ट यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो भी हमारा एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन है वो शो करेगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एग्जिस्टिंग एलिमेंट हमारे जितने भी थे वो यहाँ पे शो कर रहा है। सो लास्ट ऑप्शन विल वर्क एज ए जो भी आपने करंट फेज यहाँ पे सिलेक्ट रखा है पर्टिकुलर व्यू के लिए वो ही यहाँ पे शो करेगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैं उसको स्विच कर रहा हूँ टू न्यू कंस्ट्रक्शन, देन यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन शो कर रहा है। एंड इफ आई एम सिलेक्टिंग एग्जिस्टिंग, देन यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शो कर रहा है। सो लाइक दिस वे ऑल फिल्टर विल वर्क, and I hope the you understood the meaning of all filters, and I hope you understood the meaning and how to use those filters in the Revit. So let me switch all filters one by one. This is our show. Okay, so let me change the filters in a sequence. Okay, so first of all, we'll see existing filters. So for that, we can use the show only current phase, and over here we can select the existing phase. So as you can see, this was our existing phase, and what we demolished over here. For that, first of all you need to change the new construction, and then यहाँ से आपको switch करना है show demolish. So existing structure में हमने जो भी demolish किया था वो यहाँ पे show कर रहा है. Let me hide this. So as you can see, this previously we have existing structure, and we have demolished interior parts, interior walls and furnitures and doors, etc. And now after that we have constructed new elements. I mean, we have modeled element for the new construction. So over here we can select existing plus new. So we are able to see the elements existing plus demolish plus I mean existing plus new construction. So यहाँ पे जो भी demolish element है वो यहाँ से remove हो जाएंगे. Now we'll select show complete. So after demolition, and after the new construction, जो भी उसका output है वो यहाँ पे show करेगा in the show complete filter. So if you observe one thing, if we select this phase new plus existing, then यहाँ पे phase जो है वो particular highlight होके यहाँ पे show कर रहा है, and it is showing us that this is our existing phase in half tone and full tone. This is our new construction. But if we select show complete phase over here, then यहाँ पे जो भी सारे elements है existing plus new वो सारे यहाँ पे same tone में full tone में यहाँ पे show कर रहा है. So that is the difference between those phases. Okay, so like this way you can use the different phase filter in your project when you're working on the existing plus new construction phase. So like this way you can use the filters, and I hope you understood the meaning and when you should use the different filters in your project. So I hope you understood, and if you really like our tutorial, please leave one like and share it with your friends. So wait for the another video. Have a good day. Bye bye. Thank you.